के सारे solutions देखेंगे, सारे के सारे strategy देखेंगे कि कैसे we solve it out and all of that. But before I start, I would just wait for 10 seconds because there's a lag between when I start versus when you people can hear me. So let's wait for that. Alright, I hope it's now live. And if you people can hear me, just type a yes in the chat pod. First of all, माफी चाहूँगा आप सबसे. I'm really very sorry. There was a technical glitch. That was the reason the video was not getting streamed. I started the video right from 7, but then it was not getting streamed for a technical glitch. That's sorted now. Our backend team sorted that out. And I hope you're able to hear me clearly now. Good evening, Vihang. Good evening. I really appreciate that you waited and appreciate everyone else as well. So आज हम लोग solve करेंगे questions based out of probability. We'll just wait for another 10 very quick seconds and then get things started, right? Okay, I hope all of you can now hear me. So let's get started. We'll move ahead with solving questions based out of probability in today's session, and this is the first question. Good evening, Manoj. Good evening. Right, let's start with the first question. देखो आज के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे in terms of calculations हो सकते हैं, in terms of question text हो सकते हैं. So जो भी होंगे we'll try to tackle it out. For every question will take somewhere around a minute and 15 seconds to 20 seconds and solve out that question. Right, so let's get started. This is the first question. I'll give you a minute and a half to answer this one. Vihang, surely. What I'll do is I'll take a session day after tomorrow on or कल ही मैं देखता हूँ if I can record a video and then send it out, right? On how to approach RCs for IIFT. ठीक है? हो जाएगा बेटा, no worries. No worries, no worries. चलो इस question को solve करते हैं. It's a very nice question, you know. Let's solve this out and see what's the answer for this one. And तब तक I'll also take my pen. Yeah. Another 20 seconds and then we discuss the answer for this one. 20 more seconds. Okay, chalo. Let's solve this question now. The probability that a randomly chosen positive divisor of 10 to the power 29 is an integer multiple of 10 to the power 23 is equal to a square by b square. Okay, तो यहाँ पे एक information given है and उसका value भी given है. Probability of a randomly chosen positive divisor of 10 to the power 29. So 10 to the power 29 का कोई भी divisor is an integer multiple of 10 to the power 23. अच्छा, 10 to the power 23 का कोई एक मल्टीपल है, राइट? 10 to the power 23 का कोई एक मल्टीपल है, उसका वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. तो मुझे ये पहले निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट? ओके, अंडरस्टैंड दिस बहुत अच्छे से. What is the probability that a randomly chosen positive divisor of 10 to the power 29? So divisors की बात हो रही है, पहले तो देख लेते हैं कितने factors हैं, right? How many factors does 10 to the power 29 have? 10 to the power 29 can be written as
2 to the power 29 times 5 to the power 29 number of factors वाला formula यहाँ पे use करेंगे, that is 21 plus 1 30 multiplied by 21 plus 30. So there are a total of 900 factors, right, of 10 to the power 29, 900 divisors of 10 to the power 20. ठीक है. अच्छा, मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 23. सो जो भी मेरा 10 टू द पावर 29 को डिवाइड करता है, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 23. सो अगर 10 टू द पावर 29 एंड 10 टू द पावर 23 का कंपेयर करें, तो द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज 10 टू द पावर 6, has to be a part of that multiple, right? The other integer multiple has to be something of sorts of 10 to the power 6, or factor of 10 to the power 6. Now what do you mean by 10 to the power 6? It's equivalent to 2 to the power 6 times 5 to the power 6, that is इसके पास 49 factors है. तो मुझे अब ये देखना है कि इन 49 factors में से कितने 900 factors में से आएंगे. सिंपल है probability calculate करना, right? This is equivalent to what? 49 by 900. Now 49 by 900 का वैल्यू कितना गिवन है? a square by b square. So that means the value of a by b is equal to 7 by 30. The value of a by b is equal to 7 by 30. मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है कि b minus a का वैल्यू क्या है? b minus a would be equal to how much? It would be 30 minus 7 or 23. So the answer for this question is 23. I hope it's clear to all of you. मैं एक बार फिर से बहुत जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ आप सबको, ठीक है. लेट मी टेक अनदर पेन. ओके, देखो 10 टू द पावर 29 हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 23. सो मैंने पहले तो निकाल लिया 10 टू द पावर 29 के कितने फैक्टर्स हैं. If it has to be a multiple of 10 to the power 23, what is the difference? The difference is 10 to the power 6. So it has to be the multiple that I'm talking about has to be a factor of 10 to the power 6, which has a total of what? 49 factors. So what is the probability? It's, according to the question, it's a square by b square. And हम लोगों ने कितना निकाला? 49 by 900. a square by b square का वैल्यू अगर 49 by 900 होता है, a by b का वैल्यू 7 by 30 होएगा. मुझको लास्टली क्या निकालना था? b माइनस a का वैल्यू निकालना था, which is 30 minus 7 और 23. आई होप सोल्यूशन सबको क्लियर है. देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नो डाउट, बट देखो नॉट डिफिकल्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन एज इन इट्स टर्म्स, बट कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. नाउ मैंने आप लोग को पहले भी बोल रखा है, आईएफटी में कभी कभी क्वेश्चंस लंबे होंगे जहां पे टाइम आपका खाया जाएगा, कभी कभी कैलकुलेशंस लंबे होंगे. But this is not that difficult a question. Lengthy hai, but not that difficult. I hope it's clear to all of you. So we'll move ahead to the next question. Let's solve this one. 2 cards are drawn at random for a pack from a pack of 52 cards. Cards तो I guess आप लोग खेलते हो. अगर खेलते हो तो ये वाला question करना तो बनता है यार, है ना? चलो इसको solve करते हैं. And then I'll give you a minute and a half for solving this question, and then we'll discuss how to solve this one at our end. Take a minute and a half to solve this question, guys. Answers for this one, guys. I'll wait for another 30 seconds. इसका आंसर तो अभी तक आ जाना चाहिए. एक छोटी सी गलती विहांग, छोटी सी. चलो सॉल्व करते हैं ना. Okay, what do I have over here? 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that either both are black or both are queen? So दोनों cards मेरे पास दोनों black हो या फिर
क्वीन क्वीन हो, है ना। देखते हैं। अच्छा, टोटल 52 कार्ड्स है, उनमें से 2 कार्ड चूज करना है। डिनोमिनेटर मेरे लिए तो काफी आसान है पिक करना, 52C2 हो जाएगा। मुझे न्यूमरेटर पिक करना है ना, मुझे न्यूमरेटर पिक करना है। व्हाट डू आई हैव? दोनों के दोनों ब्लैक अगर होते हैं तो हाउ मेनी टोटल ब्लैक कार्ड्स डू आई हैव? आई हैव अ टोटल ऑफ 2 सूट्स, क्लब्स एंड एक और क्या बोलते हो, स्पेड्स। सो 13 + 13 26। इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर लो 26 में से, दैट इज 26C2। एक ही आपका आ गया। अच्छा, दोनों के दोनों क्वींस है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? देयर आर टोटल ऑफ 4 क्वींस, राइट। एक एक सूट का एक एक क्वीन, दोनों के दोनों क्वींस हैं, इज 4C2, so +4C2 हो जाएगा। बट देर आर केसेस जहां पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। कहां पे? द केस वेर वन क्वीन इज अ स्पेड का क्वीन, द अदर क्वीन इज अ क्लब का क्वीन, है ना। एक स्पेड का क्वीन है, एक क्लब का क्वीन है, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लैक भी हैं, दोनों के दोनों क्लब्स भी हैं, सॉरी क्वींस भी हैं। सो दिस इज वन सच केस विच इज गेटिंग काउंटेड, यहां पे भी, यहां पे भी। सो ये वाला जो काउंट एक्स्ट्रा काउंट हुआ, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो मेरे पास यहाँ पे वो वाला केस है, यहाँ पे वो वाला केस है, 2 केसेस है। 2 केसेस में से मुझको एक केस हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो चाहिए, राइट। दिस इज पॉसिबल फॉर मी। सो एक वाला जो वाला केस होगा उसको हटा देंगे। सो -1 इज द फाइनल आंसर, राइट। सो इसको कैलकुलेट करेंगे एंड दिस वुड बी माय फाइनल आंसर। विहंग, समझ आया कहां पे गलती करी है आपने? सारा कुछ सही करके -1 की जगह आपने -2 कर दिया, बिकॉज आपने दोनों के दोनों जो केसेस हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं करना है बेटा, सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, क्योंकि एक केस तो मुझे चाहिए, है ना। राइट, आई होप सोल्यूशन सबको क्लियर है। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट है प्लीज पूछ लिया करो, ठीक है। विल मूव एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, लेट्स सी। Cool. Let's move ahead to the next one. What do I have? Just a second. A bag contains different kinds of balls. I need to find the probability. देखो काफी सही क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। हाँ, डिफिकल्ट दुखी तब हो जाओगे अगर ये क्वेश्चन तुमको दिखे ही ना। कैसे नहीं दिखेगा? अगर आप दूसरे क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देके आपके पास टाइम ही नहीं बचे। सो उस वाले केसेस के लिए ये क्वेश्चन अगर मिस हो गया ना, इट विल बी वेरी वेरी सैडनिंग, बिकॉज आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड न्यू पीपल विल आल्सो सॉल्व। यू विल सी दैट इट्स नॉट अ दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। 30 सेकेंड्स दूंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्लीज सॉल्व इट आउट। या एब्सोल्युटली करेक्ट विहांग, नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट। देखो, अ बैग कंटेन्स 2 तरीके के बॉल्स है मेरे पास, 6 वाइट 4 ब्लैक, 2 balls are drawn at random, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर। ना सेम कलर होंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है? दोनों के दोनों इधर ब्लैक होंगे, दोनों के दोनों इधर व्हाइट होंगे। सो 6C2 प्लस 4C2 डिवाइडेड बाय, टोटल कितने बॉल्स है मेरे पास? आई हैव अ टोटल ऑफ 10 बॉल्स। सो 10 में से 2 बॉल्स मैं चूज कर लूंगा, ठीक है। ओके, व्हाट डू आई गेट ओवर हियर? 6C2 का वैल्यू हो गया आपका 15, 4C2 का वैल्यू हो गया आपका 6, नीचे आ गया आपका 45। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 21/45। 3 से डिवाइड करेंगे 7/15। देखो काफी आसान क्वेश्चन है ना, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एकदम भी नहीं है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा एंड में दिए जाते हैं। लेट्स से 20 क्वेश्चंस हैं, दिस माइट बी द 18th और द 19th क्वेश्चन,
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सेटर को ये पता है कि आप जो पहले के 17 क्वेश्चन में टाइम लोगे उसमें ही आप बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर दोगे, क्योंकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी देखोगे, झांकोगे, ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए, सो इन सारे क्वेश्चन में पहुंच ही नहीं पाओगे। सो टिपिकली मैंने देखा है जो इजियर क्वेश्चन रहता है टूवर्ड्स द एंड रहने के चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। यहाँ से हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी। Questions which are easy have a higher propensity to come at the end, and hence time management is very important when you're taking the IIFT exam. ठीक है, चलो लेट्स मूव एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे तरीके के क्वेश्चन IIFT में आते रहते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस वन आउट। अगेन इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 45 सेकेंड्स दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज सॉल्व इट आउट। लास्ट 15 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए अभी तक। लेट्स सॉल्व इट आउट वेरी क्विकली। चलिए सॉल्व करते हैं। विहांग एंड प्रणव बोथ बोल रहे हैं that the answer for this one is choice है। Let's see. A man and his wife appear for an interview for two vacancies in the same post. So there are two vacancies. It's for the same post. The probability of husband getting selected is equal to 1/7. So husband not getting selected का probability कितना हो जाएगा? 6/7. Wife selection का कितना है? It's equal to 1/5. So wife not getting selected का probability कितना हो जाएगा? 4/5. All right, what do I have? What is the probability that only one of them is selected? Okay. So either husband select होगा या फिर wife select होगा। मतलब problem मेरा क्या बन जाता है? Husband gets selected, wife not selected. ये केस हो गया मेरा। दूसरा केस क्या हो जाएगा? Wife getting selected, husband not selected. राइट, सिंपल है। सो हस्बैंड सिलेक्टेड, वाइफ नॉट सिलेक्टेड, कितना हो जाएगा मेरा? 4/35 प्लस वाइफ गेटिंग सिलेक्टेड, हस्बैंड नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, कितना हो जाएगा मेरा? 6/35। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 10/35। और सॉल्व करोगे, पांच से डिवाइड कर दोगे, 2/7। चॉइस ए बिकम्स माई करेक्ट आंसर। राइट, अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट अ क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन थोड़े से इधर उधर है, बट डिफिकल्ट नहीं, आप आराम से इसको निकाल पाओगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू आई सॉल्व दिस वन? चलो प्लीज सॉल्व इट आउट। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। अनदर 20 सेकेंड्स दूंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन एंड पेपर उठाए कैसे सॉल्व करोगे आप।
ओके, प्रणव बोल रहे हैं आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. व्हाट अबाउट अदर्स? चलो सॉल्व करें. Let's solve. In a class, 30% students are offered English, 20% offered Hindi, 10% offered both. If a student is selected at random, what is the probability he has been offered either English or Hindi? Okay, English और हिंदी उसको ऑफर किया गया है, उसका प्रोबेबिलिटी मुझको निकालना है. देखो, ये अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन में 30% मतलब 3/10, 20% मतलब 2/10, फिर माइनस ये सब करोगे तो टाइम लगेगा. इट्स अ सिंपल वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसके लिए पेन भी नहीं लगना चाहिए. 30% स्टूडेंट्स यहाँ पे है, 20% स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, बीच में 10% है. अगर बीच में 10 हुआ, यहाँ पे कितना 20%, यहाँ पे कितना 10%, टोटल कितना हो गया 40% लोगों के पास इंग्लिश और हिंदी में कुछ एक तो कॉमन मिलेगा ही आपको. सो 40% मतलब क्या, 40/100 और 4/10 और 2/5. So the answer for this question directly becomes choice D. विहांग, प्रिया, गौरव, आपने थोड़ा सा इसमें गलती कर दिया है, प्लीज चेक. ठीक है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स choice D, that is 2/5. If you have any questions or doubts, please let me know. Cool. We'll move ahead to the next question then. What do I have? A basket contains this many apples, this many oranges. All right. Defective, non-defective का question है. I give you a minute and a half to solve this question. Please solve it out and tell me. No worries, Vihang. Please make sure silly mistakes ना करो यार. पूरा question खत्म होने के बाद अगर silly mistake कर दिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना. प्रिया बोले लास्ट में थोड़ी सी गलती होगी, वेन डायग्राम से ही कर रही थी मैं. चलो बहुत अच्छा है, वेन डायग्राम से अगर आप कर रहे थे, इट्स अ गुड अप्रोच. तो वो अप्रोच तो आपके दिमाग में खटका, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन. बट हाँ, गलती नहीं करना है. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया, सो इस क्वेश्चन में गलती तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. Another 10 seconds and उसके बाद we'll start solving this question. चलो, let's solve this out. What do I have over here? A basket contains 10 apples, 20 oranges, जिसमें से 3 एप्पल और 5 ऑरेंज डिफेक्टिव है. ठीक है, 2 फ्रूट्स मैं चूज कर रहा हूं रैंडमली.
मुझे ये देखना है प्रोबेबिलिटी क्या होगा दैट ईदर बोथ ऑफ देम आर ऑरेंजेस और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव. सो बोथ ऑरेंज या बोथ नॉन डिफेक्टिव, इसका प्रोबेबिलिटी मुझको निकालना है. ठीक है, केसेस बना लेते हैं. देखो डिनोमिनेटर तो काफी आसान है, 30C2, राइट. 30 फ्रूट्स में से कोई भी दो फ्रूट्स चूज करूंगा, 30C2. न्यूमरेटर इज व्हेन, यहां पे मुझको थोड़ा सा पंगा देगा. ठीक है, चलो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं. बोथ आर ऑरेंजेस. इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट टू ऑरेंजेस फ्रॉम 20C2. दिस इज व्हेन बोथ आर ऑरेंजेस. ठीक है, अगला देखते हैं. बोथ आर नॉन डिफेक्टिव. अच्छा, टोटल नॉन डिफेक्टिव कितने, 10 में से 3 चले गए. अच्छा, या फिर 30 में से कितने, 8 चले गए, तो 22 बचे. 22 में से कोई भी सो, तो ये है बोथ आर नॉन डिफेक्टिव. ठीक है, ओके, ये दो तो बन गए. बट there is this one case which is getting covered in both my first and second case. कुछ कुछ ऐसे केसेस होंगे जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में कवर हो जाएंगे, राइट. व्हाट इफ आई एम चूजिंग एन ऑरेंज एंड नॉन डिफेक्टिव, वो यहां पे भी कवर हो रहा है, यहां पे भी कवर हो रहा है, राइट. हाउ मेनी सच ऑरेंजेस आर देयर विच आर नॉट डिफेक्टिव, 15. इनमें से दो चूज करना है. दिस इज व्हाट माय डबल काउंटेड केस. इसको मैंने यहां पे भी चूज कर लिया था, ये 15 ऑरेंज यहां पे भी है, ये 15 ऑरेंज यहां पे भी है ना. सो इसको मैंने दोनों जगह पे चूज कर लिया था, जिसके लिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, 20C2 plus 22C2 minus 15C2 divided by 30C2. This should be my final answer. Please tell me if the solution is clear to all of you or not. Please tell me if the solution is clear to all of you or not. उतना ज़्यादा difficult question ये था नहीं, but हाँ, subtracting the double case becomes very very important. अगर आप वो नहीं करोगे, ये question गलत हो जाएगी. ठीक है, आई होप सोल्यूशन सबको क्लियर है. अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज पूछ लो. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट डू आई हैव ओवर हियर, लेंथी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख के लग रहा है. प्लीज फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस वन. I'll give you a minute and a half to answer this question. Please solve it out. इन द फर्स्ट को विहांग, यस. बट देखो मैंने हमेशा बोला है, आंख बंद करके क्वेश्चन स्किप करने का कोई मतलब नहीं होता. 10-15 सेकंड लो, समझो कि वो क्वेश्चन एक्चुअलिटी में डिफिकल्ट है कि नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, आप जब सॉल्व करने जाते हो तब लगता है यार ये तो बहुत आसान है. सो वैसा अगर हो जाए, यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दोस क्वेश्चंस, करेक्ट. सो इसीलिए टेक 10-15 सेकंड्स, एक बार स्कैन कर लो क्वेश्चन, उसके बाद देखो क्वेश्चन लीव करे या सॉल्व करे. ठीक है, चलो. No worries, no worries. Thank you, Apoor, for attending these. I hope they're helping you prepare for IIFT. Chalo, I've gotten 3 answers. 2 people are saying, Uddhav and Farzana are saying the answer for this is choice C. Agastya is saying that it's choice A. So let's solve it out. What do I have? Whitrugs Brown, an e-commerce company, gives home delivery of its valuable products after receiving final orders on their website by different modes of transportation like bike, scooter, tempo, and truck. The probabilities are given. Okay, the probabilities of delivering the product late to these are this.
if the product reaches the destination in time, what is the probability that scooter will use? It's a simple question of this तुम्हारा क्या कहता है conditional probability. Approve absolutely. IIFT 2017 का पेपर है, one of my favorite papers. Reason being I scored really well in that. चलो उसको बाकी साइड पे रखते हैं. Let's solve this one. देखो यहाँ पे द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना. टिपिकली क्या करते हैं लोग, जो मैंने एक और सेशन लिया था वहां पे ये एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन ह्यूमन टेंडेंसी आपका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल के निकल जाओगे, बट क्वेश्चन में हमेशा एक नो लूप होल दिया हुआ रहेगा, एक छोटा सा एरिया जहां पे आप गलती करोगे वो दिया हुआ रहेगा. सो यहाँ पे वो है ये वाला वर्ड. The probabilities that you see over here are not probabilities of getting there in time, but getting there late. So the first thing that you need to do is probability of getting there in time क्या क्या होना चाहिए? 2/5, 3/5, 4/5 and 1/5. ठीक है, ये वाला जो ट्रैप है इस पे आपको गिरना एकदम नहीं है. ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप ये समझ जाओ. बहुत लोग ह्यूमन टेंडेंसी होता है यार, क्वेश्चन देखा, अच्छा मेरे मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, ये तो आराम से मैं निकालूंगा, धर 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 1 मिनट वेस्ट करके 1 मिनट यूज करके क्वेश्चन निकाल लूंगा, लगेगा कि हाँ. और वो ऑप्शन सबसे गंदा चीज ये होता है, वो ऑप्शन आंसर में भी होता है. चलो, सो वो मार्क करके निकल जाऊंगा सोच के कि यार ये तो सही किया है. ओनली एट अ लेटर पॉइंट कोई दोस्त आके बोलेगा कि यार क्वेश्चन में तो लेट रखा हुआ था, मैंने तो देखा ही नहीं. एंड देन यू रियलाइज शिट मैंने भी ये गलती की. ठीक है, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. राइट, चलो, सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर. स्कूटर, मुझको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि स्कूटर यूज हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर? बाइक, स्कूटर, टेम्पो, ट्रक, ये भी देख लूंगा इन द सेम ऑर्डर है कि नहीं. बाइक, स्कूटर, टेम्पो, ट्रक है. चलो बहुत बढ़िया. सो स्कूटर वुड बी इक्वल टू 1/9, उसका प्रोबेबिलिटी वुड बी इक्वल टू 3/5. नीचे मेरा क्या आ जाएगा? What do I have? I have 2/9 into 3/5. This is for bike. Plus scooter का ऐड करेंगे which is 1/9 into 3/5. सॉरी ये 2/5 होगा. प्लस फिर करेंगे टेम्पो का, दैट इज 4/9 टाइम्स 4/5. एंड लास्टली हम लोग करेंगे ट्रक का विच इज 2/9 टाइम्स 1/5. एंड फाइनली इसको सॉल्व आउट करना है. व्हाट डू आई हैव? ऊपर 3 आ जाएगा क्योंकि देखो 9 एंड 5 तो सब जगह से कट गया. सो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है टिपिकली, तो मैं इसको देख के डायरेक्टली सी आंसर मार्क कर देता हूँ. बट इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं सिंस उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 4 + 3 7 + 16 23 + 2 25. सो 3/25 बिकम्स माई फाइनल आंसर. ठीक है, सो आई होप सोल्यूशन सबको क्लियर है. 3 चीजें सीखी हम लोग इस क्वेश्चन से. एक, लंबा क्वेश्चन हो तो जरूरी नहीं है उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा. दूसरा, ह्यूमन टेंडेंसी से नंबर्स देख के फटाफट सॉल्व करने की हमारी एक टेंडेंसी होती है. गलती से भी उस ट्रैप में मत पड़ना, हमेशा रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. एंड तीसरा, अगर पार्ट ऑफ द आंसर आपका निकल चुका है, फाइनल तक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो. आई होप सोल्यूशन सबको क्लियर है. अगर ये स्ट्रैटेजीज आप लोग को अच्छा लग रहा है एंड अगर आपने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया है, प्लीज उसको दबा दो. इट रियली मोटिवेट्स अस अ लॉट टू हेल्प ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दी छोटे छोटे टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, ताकि आप एग्जाम निकाल सको. देखो एट द एंड ऑफ द डे यही जो चीज़ें होंगी आपको डिफरेंशिएट करेगा दूसरे लोगों से जो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे और आप निकालोगे, है ना. सो इट रियली मोटिवेट्स अस टू टेक मोर ऑफ दीज सेशंस. और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज प्रेस द लाइक बटन इफ यू हैव नॉट येट. ऑल राइट, विद दैट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काफी लंबा क्वेश्चन, फिर से आईएफटी का one of the ways where they try to trick people. Let's solve this question. I'll give you 1 minute to solve out this question. Let's see how do you people do it.
So will you make such videos on geometry and logs as well? Absolutely. Geometry का एक session तो मुझको लेना ही था अपूर्व. So I will take that. Uh, I'll take that after a couple of days. Logs के लिए let me see if I can arrange another session. है ना? Because we have what almost like ज़्यादा दिन बचे नहीं है. But I'll try to take both these areas. मुझको algebra का भी लेना है. So next week I'll schedule 3-4 sessions. तो उसमें please आ जाया करो. We'll solve a few very nice questions. Okay, Vihang says that the answer for this question is choice C. Let's find out. Now, I went to a picnic. There were 4 starters, 5 main course, 6 dessert. बहुत ही बढ़िया. High tea में 4 types of tea, 6 types of biscuits. बहुत बढ़िया. We all missed Uncle Sam as he couldn't join us for the picnic. We wanted to talk to him but did not have his phone number with us. I forgot the last digit of a 7-digit telephone number. If I randomly dial the final 3 digits after correctly dialing the first 4, so there are a total of 7 digits in this phone number. जिसमें से final 3 digits मुझे नहीं पता, फर्स्ट 4 डिजिट्स मैंने सही से डाले हैं, राइट. सो दिस आई हैव टेकन केयर ऑफ. व्हाट इज द चांस ऑफ डायलिंग द करेक्ट नंबर? पूरा मेरा जो नंबर है डिपेंड्स ऑन माय लास्ट 3 डिजिट्स. ओके, हाउ मेनी टोटल डिजिट्स आर देयर? 10 10 10. So there are a total of 1000 possibilities of the last 3 digits. But अंकल सैम का जो फोन नंबर है वो तो एक ही उसका कॉम्बिनेशन होगा ना. It will only be one such combination. Hence, the answer for this question is 1 out of total possibilities of 1000, which is simply choice C. Now, बहुत अच्छे तरीके से एक चीज समझते हैं इस क्वेश्चन में. काफी लेंदी है. स्टार्टिंग में कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी. स्टार्टर्स, मेन कोर्स, टी, बिस्किट्स. आप कंफ्यूज होकर आपको लगेगा यार बहुत सारे नंबर से आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाला मुझसे. बट व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, मैंने जैसे बोला, क्वेश्चन एक बार पूरी तरीके से स्कैन कर लो, समझो कि यार वाकई में डिफिकल्ट है या ऐसे ही बोला गया है यहाँ पे, राइट. दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते, आपको लगता है यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी सा है, इसमें लिटरली कुछ करना ही नहीं है, मुझको सिर्फ ये करना है, एंड ये करने में आपको कितना 20 सेकेंड्स लगना चाहिए. सो अगर 30 सेकेंड भी आप एक्सपेंड करोगे क्वेश्चन पढ़ने में, 30 सेकेंड भी आप ये 20 सेकेंड और एक्सपेंड करके आंसर निकाल लोगे, एंड यू वुड गेट अहेड ऑफ एवरीवन एल्स इन दैट एग्जाम हु थिंक्स कि दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन एंड आई विल नॉट स्टार्ट इट एट द बिगिनिंग ऑफ माय पेपर. ठीक है, देख रहे हो कैसे मैं आप लोगों को ट्रिक कर सकता हूं. बट आप लोग निकाल लोगे क्वेश्चन एग्जाम पे, क्योंकि आप लोग मेरा सेशन अटेंड करके जाओगे वहां पे, है ना. दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न. Cool. Let's move ahead to the next question. What do I have in a race? The odds in favor of cars. All right. I have a question based out of odds. So let's see अगर आपको पता है ऐसा question कैसे solve करना है तो. Again, for this question, I'll give you 40 seconds. Later, this question. अगेन आपको अगर ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं सिखा रहा हूँ अच्छा लग रहा है,
एंड अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी होगी सो प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. चलो let's solve it out, है ना. In a race, the order in favor of cars P, Q, R, S winning the race is given as 1:3, 1:4, 1:5 and 1:6. Now, respectively, ठीक है. So, the major problem जहाँ पे मैंने देखा है लोगों को ये वाले क्वेश्चन सॉल्व ना करने में, वो ये हो जाता है कि दे डू नॉट नो कि प्रोबेबिलिटी एंड ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है. इट्स नथिंग बट यू जस्ट नीड टू ऐड दीज टू नंबर्स टू गेट टू द फाइनल आंसर. So if odds in favor is 1:3, sorry, the probability of P winning the race is simply 1 by 1 plus 3, that is 4. ठीक है. सो जो भी पहला नंबर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, सम वो डिनोमिनेटर में जाएगा. ठीक है. Okay, Apurv has a very interesting question. Does IFT repeat questions? Typically not, but जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन टाइप होता है, वो बहुत बार रिपीट होता है. आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव अटेंडेड माय IFT का स्ट्रैटेजी सेशन और नॉट, बट इन दैट सेशन आई टोल्ड यू कि देयर इज दिस क्वेश्चन ऑफ वेर यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट बाउंसेस बैक एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो वाले क्वेश्चन थोड़े लॉग के क्वेश्चन हो जाते हैं. ऑल ऑफ दिस दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. Right? Chalo, let's move ahead to the question. Okay, that's about P. What's about Q? Q is equal to 1 by 5, R is equal to 1 by 6, S is equal to 1 by 7. मुझे क्या देखना है? That one of them wins the race. I need to find out one of them wins the race. So, how do I find it out? आप इधर लंबा प्रोसेस लगाओगे कि ये विन करता, ये तीनों विन नहीं करता, प्लस ये विन करता, ये तीनों विन नहीं करता, ऐसे करके लंबा 4 इक्वेशंस बनेंगे, expressions winning, I'm sorry, or you would apply a easier method. What is that easier method? Probability of one winning is equal to 1 minus probability of none winning. ठीक है. तो आप वो वाला फॉर्मूला भी आराम से यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो. वट एवर यू चूज शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. आई होप सोल्यूशन जो है आप सबको क्लियर हो गया है. ठीक है. If yes, we'll move ahead to the next question. And this, I guess, is the last question in today's session. ये वाला question had come in 2 IFT papers, if I'm not wrong. So please इसको समझ लो. Try to solve it out within 45 seconds, and then I'll explain how to solve these kind of questions as well. All right, the answer for this question, please tell me. Solve kare. Let's solve it out. A speaks truth 75% of the cases में. B speaks truth 80% of the cases में. So, what's the probability of A speaking truth? It's equal to 3 by 4. So, what is the probability of A lying? It's equal to 1 by 4. क्योंकि वो इधर झूठ बोलेगा या क्या कहते हैं सच बोलेगा, है ना. There are no cases where he can say the truth and the lie. That only happens in movies, not over here. Cool. What about B? B speaking the truth is equal to 4 by 5. B lying is equal to how much? It's equal to 1 by 5. What do I need to find out? In what percentage of cases are they likely to contradict each other? So, for example, the stated fact is sun is rises in the east. ठीक है. Okay.
Sun rises in the east. अब A ने बोला हाँ sun rises in the east. How would B contradict? B would say नहीं east नहीं कुछ और होगा, right? This is one case. So one case is when A is telling truth and B is lying. The other case is when B is saying हाँ sun does rise in the east, but then A is like no sun does not, right? So A is lying and B is telling the truth. So these are the two cases that I have in front of me. I just need to find out the answer and add them up to find out the final answer. Okay, what's the probability of A telling truth and B lying? It's 3 by 4 times 1 by 5. What's the probability of A lying and B telling the truth? It's 1 by 4 times 4 by 5. Simply इसको ऐड करना है. So 3 by 20 plus 4 by 20, that's 7 by 20. 7 by 20 का मतलब होता है 35%. So the answer for this question becomes choice B. ठीक है. Pranav answered correctly. Priya made a छोटा सा mistake. I hope Priya you found out your mistake and you have corrected that out. Cool. All right. So these are the questions that I wanted to discuss with all of you, and I hope कि after solving these 10 questions आप लोगों की जो probability के ऊपर grasp है for IIFT that is strengthened. दो चीज़ें मैं फिर से बता दूं. हमेशा try to make sure that you read the question, scan the question first before judging कि यार ये बहुत ज़्यादा difficult है या फिर यार ये तो बहुत ज़्यादा easy है ना. वो आपको कर लेनी चाहिए. Second thing, please make sure you go through all the questions in time, because if you do not do that there are very high chances that you'll be missing out on easier questions, because typically जो question setters होते हैं वो लास्ट में ही ज़्यादा easy questions देते हैं. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करना सॉल्व करो, क्योंकि ये भी उनको पता है तो वो बीच बीच में भी इजी क्वेश्चंस देंगे. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट you solve all the 20 questions. At least you scan all the 20 questions to judge which of them would be easier or difficult, right? So that's very very important. ये दो strategies अगर आपकी place में हो, if they are in place for you, tackling this exam is not that difficult for you, right? So please make sure ये जो है ये आप मॉक्स में रेप्लिकेट करो, क्योंकि अगर मॉक्स में रेप्लिकेट करोगे तभी जाके एक्चुअल एग्जाम पे होगा. एक्चुअल एग्जाम पे डायरेक्टली नहीं होनी, वेरी वेरी डिफिकल्ट नहीं होगा. ठीक है. Cool. That is then all that I wanted to discuss with all of you. Sir, I'm getting stuck in probability. Should I go through concepts and theory once more? I would say yes, absolutely. Repeat the last question, Farzana. Definitely. By last question, Farzana, do you mean this one या इसके पहले वाला? Please let me know about that. Did you mean this one or the one before this where we had odds in favor, na? जल्दी जल्दी बोल दीजिए प्लीज. Okay, I guess she is not online. Cool. So that would be all from my end today, guys. If you like this session, please press the like button. I request you again, anyone who's preparing for IIFT, उनके साथ ये video share करो ताकि more and more people can take advantage of this. And then yes, all the best for your preparations. अगर कोई भी doubt हो, कोई भी question हो, please let us know. And you can also connect with us over LinkedIn. So we'll help you out over there. Cool. All the best, everyone. Take care of yourself and prepare really well for the exam.